अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अब हम डीजी स्किल्स की क्रिएटिव राइटिंग का दूसरा क्विज़ करेंगे। तो अगर आपने 30 जनवरी तक अपना कोई भी असाइनमेंट या क्विज़ सबमिट नहीं किया तो ये आपके पास लास्ट चांस है कि आप अपने रिमेनिंग क्विज़ या असाइनमेंट में से कोई भी चीज़ जो रिमेनिंग है आप 30 जनवरी तक सबमिट करके अपना स्कोर इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा दूसरा क्विज़ स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ अबाउट क्रिएटिव राइटिंग, जो मैं नहीं कर सका था। तो स्टार्ट हम क्रिएटिव राइटिंग का दूसरा क्विज़। अब टेक अ क्विज़ जिसकी ड्यू डेट जनवरी 30 2020 है और रात 12 बजे तक आप सबमिट कर सकते हैं। स्टार्ट क्विज़। राइटिंग मीटिंग मिनट्स इज एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन नॉन फिक्शनल। The common writing practice customer must follow the sequence which is the given option is the most important element of informational non-fiction. Research and fact, non-fiction, research only, fact only, detail only. Research and fact is the most important इंफॉर्मेशनल एलिमेंट है। इसको हम बेस्ट वे टू प्रूफ रीडिंग इज while later the fresh set of eyes and mind immediate and while later getting someone else proofreading it and identify error, ask to publish it to proofreading for you। अगर आपने बेस्ट वे प्रूफ रीडिंग करनी है तो while later with the fresh set of eyes and mind, that is the most important for your proofreading। What the speed of reading? Read first last paragraph of the page, read middle and last paragraph of the page, read first and last sentence of paragraph, read the last paragraph of each page। I think read first and last paragraph of the page। Reliability provide the fact in way that the purpose and educational called informational non-fiction। Explanatory non-fictions is I think is common। Question 7, create a suitable environment to help in facing the writer block, make your writing readable, develop an interpretive flow of writing, skip the phase editing and re-edit। Facing face the writer block, make your writing readable, word use the connection clause or sentences or conjunction, adverb, pronoun or adjective। Everyone have to objective eye means an objective eye is very important for writing, to review your work, to point of view for the audience, strike your object only, to make available to other, to ask feedback from audience। I think is the first is the best one। News and fact sheet are example of information non-fiction, expository non-fiction, journalistic
Explanatory nonfiction. News and fact sheet are example of journalistic nonfiction. Thanks. We have attempt our second quiz.